Hello students, welcome to my video lecture Brahmanath. Om Shanti Shanti Shanti. In last class we discussed some problems of straight lines. Also we discussed how to find the point of intersection between two lines, okay, and angle between two lines. Suppose two lines are given, let theta be the angle between two lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then theta is equal to tan inverse a1 b2 minus b1 a2 divided by a1 a2 plus b1 b2. If two lines are parallel, then a1 by a2 is equal to b1 by b2. If two lines are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 is equal to 0. If two lines are coincident, means one line is coincident with another line. In this case, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Okay, next, how to find the point of intersection between two lines. So solving the given equation of the lines, we get the value of x and y. That value of x and y is known as point of intersection between two lines. Okay, today we are going to discuss three lines to be concurrent, means three lines passing through a single point, and next one, system of lines, that is family of lines. Okay, and some problems. Okay, so first, condition for three lines to be concurrent. Conditions for three lines to be concurrent. तीनटा लाइन गोटे पॉइंट देखिए पास करथिबे. ओके, दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज L1, दिस वन L2, दिस वन L3. तो पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, है टू फाइंड द कंडीशन फॉर थ्री लाइन्स टू बी कंकरेंट. लेट L1 such that a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and comma L2 such that a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and L3 such that a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. The above three lines are concurrent. The above three lines are concurrent passing through a single point, intersect at a single point, if determinant of coefficient of x, first coefficient of x are first column a1, a2, a3, second column y coefficient b1, b2, b3, third column constant term c1, c2, c3 is equal to 0. Okay, so expansion देखो, expansion means expanded form देखिए expand करा हबो. तो determinant a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. This is called determinant of 3 row and 3 column. 3 row means horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. So there are 3 rows and 3 columns.
ओके तो ऑर्डर इज 3 into 3 ऑर्डर इज 3 into 3 फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x a1 a2 a3 सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y b1 b2 b3 थर्ड कॉलम कांस्टेंट टर्म c1 c2 c3 तो एक्सपांशन देख लीजिए फर्स्ट नहीं किसी कहले a1 तो a1 इंटू a1 कंटेन करते रो छाड़ दियो एंड कॉलम छाड़ दियो डिलीटिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओके बिकॉज a1 कंटेन करती तो a1 कंटेन करते रो एंड कॉलम को डिलीट कर दियो रेस्ट कौन है कहल रेस्ट है b1 b2 c2 b3 c3 ओके नेक्स्ट दिस इज प्लस देन दिस इज माइनस b1 a1 इंटू a1 कंटेन करते रो कॉलम छाड़ देल b2 c2 b3 नेक्स्ट माइनस b1 प्लस माइनस प्लस तो माइनस b1 इंटू b1 कंटिन्यू करते रो छाड़ दियो रो छाड़ कलम छाड़ रो छाड़ देल कलम छाड़ देल रहा कौन आउ a2 c2 a3 c3 प्लस माइनस प्लस m प्लस माइनस प्लस प्लस c1 कंटिन्यू करते रो छाड़ कलम छाड़ a2 b2 a3 b3 a2 b2 a3 b3 ओके तो इज इक्वल टू a1 इंटू मल्टीप्लाई दिस टू साइड b2 c3 तो b2 c3 माइनस c2 b3 दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस ओके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ओके माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस b2 a3 देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ओके दिस इज द एक्सपांशन तो यही कंडीशन से सैटिस्फाई करिवो इज इक्वल टू 0 आसीबो ताले हमें कोन कहबा 3 लाइन्स टू बी concurrent 3 lines to be gonna concurrent तो remember this formula है this is the expansion of this और expanded formula एतिकी इजिल कौन आसा पड़ो 0 है then we say that 3 lines passing through a single point गोटे पॉइंट देकरी पास करेंगे ओके तार प्रूफ देख टे प्रूफ सॉल्विंग L1 L2 किसी ना L1 L2 इक्वेशन सॉल्व कल गोटे पॉइंट आसला से पॉइंट नहीं थर्ड रे पुट करिवो यदि सैटिस्फाई कला ताले 3 लाइन्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट ओके सॉल्विंग दुईटा इक्वेशन सॉल्व कल तो x पाइल y पाइल थर्ड इक्वेशन नहीं पुट कल जदि इज इक्वल लेफ्ट साइड पकड़ जब राइट साइड आसीगला जाना पड़ो 3 लाइन्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट ओके गिवन L1, L2 and L3 are equation of 3 lines. Equation of 3 lines. Solving 1 and 2. Solving 1 and 2. Solving L1. Solving the equation of L1 and L2. We get देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b1 a2 देयरफॉर व्हाट इज x b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b1 a2 कमा y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 divided by a1 b2 minus b1 a2 this is the value of x and y put the value of x and y in equation 3 first second को solve कर लो x पाइलो y पाइलो थर्ड इक्वेशन में put करो put the value of x and y put the value of x and y in equation 3 in L3 ओके तो ना देखड़ी a3 into x रे वैल्यू b1 c2 minus c1 b2 divided by a1 b2 minus b1 a2 is equal plus b3 into c1 a2
minus a1 c2 divided by a1 b2 minus b1 a2, okay, plus c3 is equal to 0. Or simplifying, find the LCM. So implies a3 into b1 c2 minus c1 b2 plus b3 into c1 a2 minus a1 c2, okay, plus c3 into, find the LCM, a1 b2 a1 b2 minus b1 a2 is equal to 0, okay. And we can write this determinant for a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 देखो इज इक्वल टू कौन 0. देखो a3 यदि हम थर्ड रो अनुसार एक्सपेंड करिया थर्ड रो अनुसार अकॉर्डिंग टू थर्ड रो a3 इंटू a3 कंटिन्यू करते हैं रो छाड़ दियो कॉलम छाड़ दियो b1 c2 माइनस c1 b2 b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस b3 इंटू रो छाड़ कॉलम छाड़ a1 c2 माइनस c1 a2 प्लस c3 रो छाड़ दियो कॉलम छाड़ दियो a1 b2 माइनस b1 a2 okay. This is the required condition such that 3 lines to be concurrent गोटे पॉइंट देकरी पास करथिबे, okay. This is the question. So that the lines lx plus my plus n is equal to 0, comma mx plus ny plus l is equal to 0, and nx plus ly plus m is equal to 0 are concurrent if l plus m plus n is equal to 0. कौन कहूँ जदि 3टा लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट ताले if l plus m plus n is equal to 0 then 3 lines passing through a single point, okay. So proof देखो ठीक है, proof equation of given lines, equation of the given lines lx plus my plus n is equal to 0 equation 1, mx plus ny plus l is equal to 0 equation 2, and nx plus ly plus m is equal to 0 equation 3, okay. Eliminating x comma y, eliminating x and y, x and y from above 3 equation, from above or suppose 3 lines to be concurrent, suppose 3 lines to be concurrent, then we need to show that L plus M plus N is equal to what? 0, okay. As 3 lines are concurrent, then by condition of concurrency, determinant for first column x रो coefficient L M N, second column y रो coefficient M N L, third column constant term N L M is equal to what? 0, is equal to 0. So expand this, expanding on unexpanding we get L into रो L कंटिन्यू करते रो छाड़ा M कॉलम छाड़ा N L L M माइनस M इंटू प्लस माइनस M इंटू M कंटिन्यू करते रो छाड़ा कॉलम छाड़ा M L N M प्लस N इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छाड़ो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छाड़ो M N N L
mn n l is equal to 0. Okay, so implies L into nm minus L square minus m into m square minus ln plus n into ml minus n square is equal to 0. और multiply this, तो lmn minus l cube minus m cube plus lmn plus lmn minus n cube is equal to 0. और this implies l cube plus m cube plus n cube minus 3 lmn is equal to 0. Okay, अच्छा, तो this implies factorize this l plus m plus n into l square plus m square plus n square minus lm minus mn minus nl is equal to 0. So this implies l plus m plus n is equal to 0. Hence 3 lines to be coplanar. Hence 3 lines are coplanar. Concurrent, not coplanar, concurrent. Okay, concurrent. Okay, next question. So that the area of the triangle formed by the given lines, formed by the sides of the given lines, 1 y is equal to m1x plus c1, second line y is equal to m2x plus c2, and third line x is equal to 0 is given by half into c2 minus c1 whole square divided by mod of m2 minus m1. ओके, एटा प्रूव करिया में एरियाटा एति बोली प्रूव करिया में. ओके, सॉल्यूशन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो 3 लाइन्स दिया है, 3टा ट्रायंगल 3 साइड्स, तो 3 साइड्स रे इक्वेशन गिवन अछि. ओके, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस ओरिजिन, तो दिस इज वन लाइन y is equal to m1x plus c1, this is another line y is equal to m2x plus c2, this is another line x is equal to 0. This is a point, this is b point, this is c point. So we need to find the coordinate of ABC. This is y is equal to m1x plus c1, this is y equal to m2x plus c2, and this is x is equal to 0. X is 0 means y axis. So these are the 3 sides of the triangle ABC. So find the area of the triangle ABC. Okay, so area of triangle ABC means we need to find the coordinate of ABC first. So ABC means how to find A coordinate. So A coordinate is the point of intersection between the x equal to 0 line and y equal to m1s plus c1. So solving these two equations we get the coordinate of A. Similarly solving BC line and AB line we get the coordinate of B, and solving the equation BC line and AC line we get the coordinate C. Okay, so first we find the coordinate of the vertices A, B, C of the triangle ABC. Okay, equation of the given lines. Equation of the given lines. Y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and x is equal to 0. Okay, solving, let this is suppose AB line, let this is BC line, and let this is SC line. So from the figure, so solving x is equal to 0 and y is equal to m1x plus c1. So put x is equal to 0, what is y1? When x is equal to 0, y is equal to c1. Therefore coordinate of A is equal to 0, c1. Next, solving the equation x is equal to 0 and y is equal to m2x plus c2. Solving SC and CB. SC and CB ର point of intersection ହେଲା C, तो solve कले C ର कोऑर्डिनेट पाइबा. ओके,
तो x is equal to 0 when x is equal to 0 y is equal to c2. Therefore coordinate of c is 0 comma c2. This is 0 comma c1, this is 0 comma c2. Next also solving y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2. So this implies m1x plus c1 is equal to m2x plus c2, implies m1 minus m2 into x is equal to c2 minus c1. Okay, c2 minus c1. So implies x is equal to c2 minus c1 divided by m1 minus m2. Okay, therefore y is equal to m1x plus c1 equal to m1 into x equal to c2 minus c1 divided by m1 minus m2 plus c1. x जगह रे वैल्यू पुट कर देले ए x जगह तो b पाई हमें तो इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 ये कैंसिल तो m1 c2 माइनस c1 m2 m1 c2 माइनस c1 m2 डिवाइड बाई m1 माइनस कौन m2. ओके तो दिस अनदर पॉइंट आसला कहल तो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ b is equal to c2 minus c1 divided by m1 minus m2 comma m1 c2 minus c1 m2 divided by m1 minus m2 okay. Therefore required area of the triangle ABC is equal to half into first x1 y1 x2 y2 x3 y3 again x1 y1 और ये आंसर लिखली हम x1 x2 y1 y2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 देखो तो x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 एतिकी स्क्वायर यूनिट देखो दिस इज हाफ इंटू x1 दिस इज x1 y1 दिस इज x2 y2 means this is c2 minus c1 by m1 minus m2 comma m1 c2 minus c1 m2 by m1 minus m2 next this is x3 y3 okay. तो use the formula x1 y1 x1 is 0 x2 असला c2 minus c1 by m1 minus m2 और x3 है 0 x3 is 0 x1 और 0 x1 x2 x3 x1 y1 is c1 y2 m1 c2 minus c1 m2 by m1 minus m2 है y3 c2 x3 x1 c1 okay x1 c1 okay. तो इज इक्वल टू हाफ इंटू मल्टीप्लाई देखो इसमें मल्टीप्लाई करो मोड ऑफ 0 माइनस इधर मल्टीप्लाई करो दिस इज c1 c2 minus c1 square divided by m1 minus m2 okay. नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करो
plus c2 square minus c1 c2 divided by m1 minus m2 minus 0 plus 0 minus 0. So is equal to half into mod of m1 minus m2 common आसीगला. So this is minus c1 c2 plus c1 square minus plus c2 square plus c1 square plus c2 square minus c1 c2. ओके आउ से रहा तो इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस इज c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. तो इज इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर 20 का माइनस 2ab तो c1 माइनस c2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोड ऑफ m1 माइनस m2 बिकॉज माइनस x रो मोड इज इक्वल टू प्लस x एतिकी स्क्वायर यूनिट दिस इज कौन स्क्वायर यूनिट. ओके स्क्वायर यूनिट देख तो हाफ इंटू c2 माइनस c1 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर जहाँ बी माइनस होल स्क्वायर था डिवाइड मोड ऑफ m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 बिकॉज माइनस x रो मोड इज इक्वल प्लस x. ओके given that find the equation of straight line passing through the point 3 comma minus 2. And the equation of straight lines means more than one line passing through a fixed point 3 comma minus 2 making angle 45 degree with the line 6x plus 5y minus 1 is equal to 0 or 6x plus 5y is equal to 1. ओके फास्ट बुझ टिके सपोज सॉल्यूशन गिवन दिस इज द लाइन दिस इज 6x plus 5y minus 1 is equal to 0. This is the line. Okay, so required line passing through a fixed points making 45 degree with the line चेतिकी. तो suppose this is the line making 45 degree इमती हो पारे और दिस इज द लाइन आल्सो मेकिंग 45 डिग्री तो ये भी हो पारे. तो दिस इज द पॉइंट 3 कॉमा माइनस 2 तो 3 कॉमा माइनस 2 डिग्री लाइन टा पास करुच्ची है जो लाइन टा यही लाइन सहित 45 डिग्री इनक्लाइन करुच्ची. तो इधर ये भी लाइन हो पारे ये भी लाइन हो पारे तो आम दुईटा लाइन पाइबा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिखाई अर्थ मोर देन वन लाइन. ओके suppose this is a point, this is b point, this is c point. Okay केमी जाने देखो किछ नहीं बहुत सिंपल फ्रॉम द फिगर equation of BC is equal to 6x is 6x plus 5y minus 1 is equal to 0. Therefore, slope of BC is equal to what? Minus coefficient of x divided by coefficient of y minus 6 by 5. This is the slope of BC. Okay, slope of BC. Since ये 45 degree ये 45 degree तो ये कौन होगा 9 degree होगा. This is कौन होगा 90 degree होगा. ओके बिकज बोथ आर 45 तो ये कौन हम 90. ठीक अच्छे तो आम यही लाइन आसीगला ताले ये लाइन पड़ा आसो कहीं देयर स्लोप्स आर कौन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा बिकज दिस एंगल 90 डिग्री. नेक्स्ट लेट स्लोप ऑफ AB इज m. स्लोप ऑफ AB कौन है m. Okay, m slope of AC so the slope of AC is equal to the slope of AC minus 1 by m because since AB perpendicular to कौन AC AB perpendicular to AC तो slope of AB is m तो slope of AC is minus m.
Okay, given angle ABC is equal to 45 degree. Angle ABC कौन सी ABC is equal to 45 degree. Okay, therefore tan theta is equal to formula कौन सी ना m2 minus m1 mod divided by 1 plus m1 m2. Okay, so suppose this is m1 and this is m2, this is m is m2 m is what m2. So implies tan 45, so theta is equal to 40, this is theta, so tan 45 is equal to mod of m2 means m minus m1 means minus 6 by m, so minus 6 by m 6 by 5 minus 6 by 5 divided by 1 plus m1 is minus 6 by 5 into m2 is m. Okay, so implies tan 45 means 1, this is 5m plus 6 divided by 5 minus 6m is equal to 1. Okay, so implies 5m plus 6 divided by 5 minus 6m is equal to plus or minus 1, because mod of x is equal to a, so x is equal to plus or minus a. So taking plus sign and taking minus sign, taking positive sign कौन आसीबो 5m plus 6 by 5 minus 6m is equal to plus 1, or 5m plus 6 is equal to 5 minus 6m implies 11m is equal to minus 1, implies m is equal to minus 1 by 11, m is equal to minus 1 by 11. Next, taking negative sign, so implies 5m plus 6 by 5 minus 6m is equal to minus 1, so implies 5m plus 6 is equal to minus 5 plus 6m, so implies m is equal to 11, m is equal to what 11. तो m is equal to minus 11 1 by 11 और m is equal to 11 means तो दुईटी जगह मल्टीप्लाई कले माइनस 1 देखो m minus 1 by 11 into 11 is equal to minus 1, तो अर्थ गोटे minus 1 by 11 स्लोप आ गोटे plus 11 स्लोप, तो दूसरा स्लोप आसीगला, तो स्लोप आसीगला पॉइंट आसीगला, इक्वेशन ऑफ द लाइन बाहर करिबा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन of the required lines कौन अच्छी y minus y1 is equal to m into x minus x1. ओके, तो ये है x1 y1, m means इधर ये गोटे और ये गोटे m दुईटा m, तो implies y minus y1 plus 2 is equal to m minus 1 by 11 into x minus x1, m कौन नेला minus 1 by 11, तो implies 11y plus 22 is equal to minus x plus 3, implies x plus 11y minus plus 19 is equal to 0. This is one line. Okay, when m is equal to only 11, then equation of the line is y minus y1 is equal to 11 into x minus x1, so implies y plus 2 is equal to 11x minus 33, or 11x minus y minus 35 is equal to 0. This is another line. This is x plus 11y plus 19 equal to 0, 11x minus y minus 35 equal to 0. So a1 is 1, a2 is 11.
b1 is 11, b2 is -1. तो a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0. Hence two lines are perpendicular to each other. Okay, तो ये ला one line, ये ला another line. So these are the two equation of lines. Okay. Family of straight lines. Family of straight lines. Family of straight lines. Okay, family of straight lines. First, note equation of the line, note 1. Equation of the line parallel to the given line ax plus by c is equal to 0 is given by ax plus by plus k is equal to 0, where k is constant to be calculated by the given condition. Okay, two lines are parallel means देखो equation line parallel to the given line ax plus by plus c equal 0. तो ax को ax रहला, by को by रहला, खाली constant term ही चेंज होउछि. c जगह कौन लिखला प्लस के, तो k रो बर्तन वैल्यू बाहर कर दिया. x a b गिवन अछि. ओके, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k यूजिंग गिवन कंडीशन गिवन थी से कंडीशन यूजिंग आम कौन करिया k रो वैल्यू बाहर करिया. ओके, तो जेहेतु स्लोप जाक इक्वल आर स्लोप जहाँ आर स्लोप था से सेम रखा देख ये ax प्लस by as प्लस by. ओके, सेकंड पॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to the given line x plus by plus c is equal to 0 and passing through the point condition दिया है गला point x1 comma y1 is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0. मीन जदि ये कंडीशन दिया है देखो x पैरेलल अच्छी ax प्लस by मीन सेम रहिबो k रे वैल्यू डायरेक्ट अना है कौन कराई x जगह x minus x1 y जगह y minus y1 पड़ी जाइए. पर्टिकुलरली पॉइंट गिवन थिले तो a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0. This is required equation of the कौन line parallel to the given line. मीन्स x रो कोफिशिएंट a अच्छी डी x रो कोफिशिएंट a अच्छी y रो कोफिशिएंट b y रो कोफिशिएंट b आम एटा को से आंसर कले भी केडा आसी k is equal to कौन पाइबो ax1 minus ax1 minus by1 आसीबो k रे वैल्यू एटी जा पुट करिया कहले. ओके, देखो find the equation of the line passing through the point 3 comma minus 4 and parallel to the line 4x minus 3y is equal to 10. यही लाइन को parallel अच्छी तो यही लाइन को parallel अच्छी यही पॉइंट दे पास कर तो यूज दिस फार्मूला. ओके, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन which is parallel to the given line 4x minus 3y is equal to 10 and passing through 3 comma minus 4 is a कहले x रो कोफिशिएंट 4 into x minus x1 plus b कहले minus 3 into y minus y1
इज इक्वल टू 0 a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज 4x माइनस 12 माइनस 3y माइनस 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 12 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज 4x माइनस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 दिस आर इक्वल इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन देख 4x माइनस 3y माइनस 3 सेम रहला खाली कांस्टेंट टर्म ही चेंज है दिस आर इक्वल इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 3 माइनस 4 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन व्हाट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 ओके नोट 3 equation of the line perpendicular to the given line x plus by plus c is equal to 0 and pass 0 is given by interchange the coefficient of x and y and then put a negative sign here okay so bx minus ay कौन कल इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x and y plus k is equal to 0 okay where k is constant to be calculated okay by the given condition okay the note 3 example find the equation अब देखो जेहेतु टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y अर्थ a इंटू b प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मीन्स b इंटू माइनस a तो ab माइनस ba इज इक्वल टू व्हाट 0 तो a1 a2 प्लस b1 b2 कौन हाँ पड़ो 0 हाँ पड़ो है नहीं कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x प्रोडक्ट बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ x plus product between the coefficient of y is equal to 0 then two lines are perpendicular to each other find the equation of the line perpendicular to the line 5x minus 7y plus 8 is equal to 0 and passing through 3, 9 ओके तो आंसर देख टिके इक्वेशन ऑफ द लाइन आंसर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 5x minus 7y plus 8 is equal to 0 is 5 and 7 को इंटरचेंज करो तो 7x ये माइनस अच्छी प्लस कर दियो प्लस 5y है ना खाली डिजिट जा चेंज करियो साइन चेंज करियो डिजिट खाली चेंज करो 7x प्लस ये साइन कौन था माइनस था प्लस कर दल प्लस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0 ओके तो where k is constant to be calculated तार वैल्यू बाहर करिबा since the line required line passing through what 3, 9 तो put x is equal to 3 and y is equal to 9 in equation 1 पको तो 7 into 3 plus 5 into 9 plus k is equal to 0 implies k is equal to 21 minus 21 minus 45 तो minus 66 okay तो put the value of k
in equation 1 we get required equation of the line. We get required equation of the line, that is 7x plus 5y minus 66 is equal to 0. This is the required equation of line perpendicular to the given line and passing through 3 comma 9. Passing through 3 comma 9. Okay. Next, note 4. Note 4. Equation of the line. Equation of the line passing through the point of intersection. Point of intersection of the lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is given by a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, where lambda is a constant to be calculated by the given condition, by the given condition or conditions. Okay, देखो तो this is given line L1, this is another line L2, both are intersect at P. Both are intersect, two lines are intersect at a point, means common point degree pass करियो third line. तो this is the third line. थर्ड लाइन इक्वेशन हम आनिया का होची L3 आनिया का होची. तो L3 is equal to L1 plus lambda times L2 is equal to कौन 0. L3 is equal to L1 plus lambda times L2 is equal to 0 और L2 plus lambda times L1 is equal to 0. ओके, अच्छा, वेर लैम्बडा वैल्यू बाहर करने एक्सट्रा कंडीशन दिखाई से एक्सट्रा कंडीशन यूज कर लैम्बडा वैल्यूटा बाहर करवा. दिस इज वन मेथड. एनादर मेथड कौन अच्छी L1 एंड L2 इक्वेशन को सॉल्व कले पॉइंट पाइब नहीं कहल. सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 वी गेट द कोऑर्डिनेट P. ओके, तो कोऑर्डिनेट P पाइल एक्सट्रा कंडीशन दिखाई तो सही कंडीशन आ पॉइंट नहीं करी आम कौन करिए इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 बाहर कर सी आउट मेथड. ओके, बुझीपार टू मेथड गोटे है L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल 0. लैम्बडा वैल्यू बाहर करने एक्सट्रा कंडीशन दिखाई से कंडीशन यूज कर बाहर करवा. नेक्स्ट केस और अनदर वे कौन कर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 एंड L2 वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम, दैट इज P. तो P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and using the given condition and P find the equation of the line L3. Okay, question, find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines x plus 3y plus 2 is equal to 0 and x minus 3y minus 4 is equal to 0. ये दुईटार कॉमन पॉइंट देकरी आमर रिक्वायर्ड लाइन टा आसुछि. रिक्वायर्ड लाइन टा पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन है एंड रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. तो रिक्वायर्ड लाइन स्लोप एंड दिस लाइन स्लोप प्रोडक्ट आसो -1. ओके, तो ठीक है सॉल्यूशन देख टे सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the lines x plus 3y plus 2 is equal to 0 and x minus 2y minus 4 is equal to 0 is
given by first line plus lambda times second line is equal to 0. X plus 3y plus 2 plus lambda times x minus 2y minus 4 is equal to 0. Okay, so this implies this equation 1. This implies x plus 3y plus 2 plus lambda x minus 2 lambda y minus 4 lambda is equal to 0. और x कॉमन कर देले 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस y कॉमन कर देले 3 माइनस 2 लैम्बडा इंटू y प्लस 2 माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 स्लोप of the line is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of y. तो m1 is equal to m1. Let m1 is equal to m1. Let m1 is equal to minus 1 plus lambda divided by 3 minus 2 lambda. Okay. अच्छा, required line 1 which is perpendicular to the line, x plus y minus 2 is equal to 0. Okay, there here slope of the line m2 is equal to, so the line x plus y minus 2 is equal to 0 is m2 is equal to x रो कोफिशिएंट माइनस x रो कोफिशिएंट बाय y रो कोफिशिएंट minus 1 by 1 minus 1. Okay, since required line is perpendicular to the given line x plus y minus 2 is equal to 0, therefore m1 into m2 is equal to minus 1. Product of their slope is equal to minus 1. So what is m1? m1 is minus 1 plus lambda divided by 3 minus 2 lambda into minus 1. m2 is minus 1 is equal to minus 1 is equal to what? Minus 1. So this implies 1 plus lambda divided by 3 minus 2 lambda is equal to minus 1, or implies 1 plus lambda is equal to minus 3 plus 2 lambda, minus 3 plus 2 lambda. Okay, so implies 2 lambda minus lambda is equal to 1 plus 3. So lambda is equal to what? 4. Lambda is equal to 4. Put the value of lambda in equation 1. Put the value of lambda in equation 2. In equation 2 we get required equation of the line. देखा नहीं पका लैम्बडा जगह 4 पका 1 plus 4 into x plus 3 minus 8 into y 2 into 4 plus 2 minus 16 is equal to 0. लैम्बडा जगह 4 पड़ला तो implies 5x minus 5y minus 14 is equal to 0, or 5x plus 5y plus 14 is equal to 0. This is the required equation of the line. Okay. Next question, find the equation of the line passing through the intersection of the lines x plus 3y minus 1 equal to 0 and 3x minus y plus 1 equal to 0, and the centroid of the triangle whose vertices are the points means this is a triangular three vertices coordinate दिखाई तो centroid of the triangle ABC बाहर करिबा तीन जगह coordinate ऐड करिया by 3 कले centroid आसीबो. तो required equation of the line passing through the centroid of the triangle and also passing through
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू गिवन लाइन्स। the solution का देखो, this is one line, this is another line, this is the point of intersection. तो this is the triangle ABC हबो, this is the triangle ABC, ABC, this is the median, okay, this is the median. तो यही पॉइंट ला सेंट्रोइड, तो लाइन टा यही पॉइंट दे पास करुछि, द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके। तो यही पॉइंट सेंट्रोइड, दिस इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है ना। आउ यही पॉइंट बाहर करि परिबा, तो एडी दिरे सॉल्व कले यही पॉइंट आसीबो। तो यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वन मेथड, अनदर मेथड, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड लाइन इज इक्वल 0। तापर नेक्स्ट जहाँ आसला इक्वेशन से एक्स जगह सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई जगह सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट पुट करवा, तो आम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पाई आम, ओके। x plus 3y minus 1 equal 0. This is 3x minus y plus 1 is equal 0. Solution. Solving the equation of the given lines. Equation of the given lines. X plus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 is equal to 0 है। इक्वेशन 2 into 3 plus 1, इक्वेशन 1 gives 9x plus x, 10x minus 3y plus 3y cancel, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2 is equal to 0. तो x is equal to minus 1 by 5, okay. Therefore y, put the value of x in equation 2, we get y is equal to 3x plus 1 is equal to 3 into minus 1 by 5 plus 1, तो 2 by 5 minus 3 plus 5 2 by 5, तो y is equal to 2 by 5. Therefore point of intersection between two given lines, point of intersection between two given lines, between two given lines, x plus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 is equal to 0 is गोटे आसला minus 1 by 5 and 2 by 5, okay. Next to find the centroid of the triangle ABC, centroid of the triangle ABC, okay. So centroid of the triangle ABC, centroid of the triangle ABC where central triangle whose vertices are 3 comma minus 1 comma 1 comma 3 and 2 comma 4 is 3 plus 1 x coordinate plus x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 minus 1 plus 3 plus 4 divided by 3, तो is equal to 3 plus 1 4 plus 2 6 by 3 comma this is also 6 by 3, this is 2 comma 2, this is the centroid. तो centroid and this point देखिए पास करची लाइन टा centroid दे पास करची and यही पॉइंट दे पास करची, तो लाइन इक्वेशन कले यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ओके। यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला, यूजिंग 2 point formula we can find the equation of straight line, equation of required line, okay. तो x1 y1 कहले 2 2 नहीं जा, x2 y2 minus 1 by 5 comma 2 by 5, okay. Required line, equation of required line is y minus y1
is equal to y2, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. So y minus 2 is equal to 2 by 5 minus 2 divided by minus 1 by 5 minus 2 into x minus 2. So y minus 2 is equal to 2 minus 10. 2 minus 10 is what? Minus 8 by 5 divided by minus 7 by 5 into x minus 2. 5 cancel, minus 1 cancel. So 7y minus 14. 7y minus 14 is equal to 8x minus 16. So implies 8x minus 7y minus 2 is equal to 0. This is the required equation of the line. Which is the required equation of the line. Okay. In next class we shall discuss perpendicular distance from the perpendicular distance from the point to the line, that is the shortest distance from the point to the given line, okay, and their application. Okay.